Good afternoon, students. I welcome you all to my class in the paper of Philosophical Foundations of Education. Myself, Dr. Rory Rai. I shall be taking this fourth unit and continuing my topic on John Dewey relating to pragmatism. In the earlier class, I had discussed with you certain aspects of pragmatism, pragmatic approach by John Dewey. Continuing with that and keeping ahead on the topic, we shall be discussing in both the medium of instruction, English as well as Hindi. It will be a bilingual class, and I hope that any problems that you face, you shall feel free to post questions to me. Regarding different aspects of pragmatic approach, as we discussed earlier, the important crux of pragmatic theory is based on experimentation, based on experience, on utility, on change. And pragmatic theory says that nothing in this life is permanent, nothing is certain except the change itself. So pragmatism believes in utility, whatever is of utility, whatever is जो कुछ आज उपयोगी है, जिसके लिए भी ज़रूरत है, जो आज का दौर है, जो आज का समय है, उसके अनुसार हमें चेंजेस लाने होंगे और शिक्षा का वही योगदान है जो हमें काबिल बनाए कि हम आने वाले समय में हम बहुत सारी चीज़ों को convert कर सके. But there are many points, many factors that pragmatic approach is talked about, and certainly John Dewey is said to be a very innovative recent time philosopher of his time, in an American philosopher who has discussed different aspects. So that we discuss about the different aspects of pragmatism, it simply means that these things that we are talking about is not related merely to the points on how those changes occur, those things have come into place, those relation of different aspects. It is simply that these changes are occurring because of the times. समय काल परिस्थिति बदलती रहती है, लोगों के विचार बदलते रहते हैं, लोगों की नीड्स बदलती रहती हैं, उसी के हिसाब से शिक्षा की बात करी गई है. सो जॉन ड्यूई ने बच्चों को क्या ऑर्गेनिक बताया, क्या उनकी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन रही, किन चीज़ों के बारे में उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, द ऑन्टोलॉजी दैट ही टॉक्स अबाउट, द एक्सियोलॉजी और द वैल्यूज, जिन मूल्यों की बात करी, मूल्यों को सिचुएशनल बताया. इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जो कंसेप्ट ऑफ रियलिटी है, जो सत्य है, जो परिवर्तित होता जा रहा है, जिसके चेंजेस के अकर करने की बात करी गई है, दे आर रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड हाउ दोज चेंजेस अकर, हाउ दोज चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट, इट लीड्स टू डिफरेंट human minds. And the reality exists only function of human minds, and which uses social experience and scientific method. And so these methods that he has talked about has been the relation in environment and man. जो मनुष्य का, मानव का रिश्ता है environment के साथ, जो समाज के साथ में, उसको ही सत्य माना है और वही सत्य importance रखता है. Then he has talked about the different concepts of society. According to John Dewey, the thought that modern industrialization, he talks about during these, John Dewey says that these thoughts should be one which should nurture the individuality and sociality of the child. In accordance to Dewey, the individuality is important because it is the source of novelty and change in humans. और ये अकर करती है मनुष्य के भिन्न विचारों पे, विचारधाराओं पे. So here they talk about the concept of knowledge, and he says that the authentic and reliable knowledge is that we attain through experience. जो knowledge किसी किताबी ज्ञान से आए, किसी और के माध्यम से आए, वो ज्ञान सच नहीं है, या वो उसका आधार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या उसकी नॉलेज इतनी एक्सपीरियंस के माध्यम से ना आने के कारण उतनी रिलायबिलिटी या ऑथेंटिसिटी को नहीं रखती है. So he says that this concept of will be the condition of environment which will influence different aspects. So he says that the notion of God, as he prefers to say, of the divine, refers to the unity of ideas
ends or values that we project in our imagination and strive to realize by our action. He has talked about the traditional education, the progressive education, and as a philosopher, we find that his views, his thoughts have varied, has talked about. As a pragmatic philosopher, John Dewey says that he is a person who is oriented towards the success or failure of a particular line of action. So the thought that is a person as a practical person, but when he is talked about as an educator, not as a philosopher, but as a progressivist, he says that a person who advocates progress in education politics, तो वो आगे बढ़ता है. तो प्रैग्मेटिस्ट की तरीके से उन्होंने कहा है कि एक प्रयोजनवाद को ध्यान में रखते हुए, एक प्रयोजक स्थिति को सामने में लाते हुए, पर्सन who when talks as an oriental towards the success or failure of a particular line of action, thought, तो वो practical person कहलाता है. So this is how he advocates. But अगर progressive होने की बात करी जाए तो आगे बढ़ने की line को उसने importance दी है, उन्होंने importance दी है. So he talks about the principles of good teaching based on Dewey's educational philosophy. Child को center माना है, continuous education की बात करी है, related in terms of एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस. तो बेस्ट मेथड जो लिबरेट करता है, जो एनकरेज करता है थिंकिंग, वो उन्होंने कहा है प्रैग्मेटिक अप्रोच है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, इसमें प्रजातांत्रिक बात है. तो जो मेथड अप्लाई किया जाए उसको सप्लीमेंट कर सकें किसी और मेथड के साथ में, जिसका मूल्यांकन करने के लिए एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग की बात करी जाए, तो उसमें लगातार प्रैक्टिस की जाए, लगातार रिव्यू किया जा सके, तो उसको इंटीग्रल पार्ट माना गया. So this is the kind of education that he has promoted and has talked about. Then we come to the synthesis. Now this is an important aspect when he talks about synthesis of Dewey's thoughts on education. सबसे पहली चीज इन्होंने कही है कि John Dewey has talked about education as a necessity of life. He says education is a necessity of life. सबसे अहम, सबसे important, सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली, प्रैक्टिकल यूज की जो चीज़ है वो है शिक्षा. और शिक्षा एक सोशल फंक्शन की तरह से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और ये सिंप्लीफाई करती है फैक्टर्स को दैट विशेस टू डेवलप and purifying the, idealizing the existing social functions, creating a wider and a better balanced environment. जब तक बैलेंस नहीं होगा समाज में, किसी भी तरीके की हम बात करेंगे जिसमें आगे बढ़ने की बात ना हो, तो अगर हम केवल एक एस्पेक्ट, कहीं एक पहलू लिया जाता है, तो वो चीज़ों को बढ़ने से रोकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम केवल बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की, तो हम कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं. जब हम ट्रेडिशनल चीज़ों की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट छूटता है. लेकिन जहाँ बैलेंस होगा, जहाँ सामंजस्य होगा, तो वो डायरेक्शन या ग्रोथ या प्रिपेयर्डनेस बेहतर हो पाएगी, लर्निंग ज़्यादा इनकरेज करेगा. So by coming to the fact what education is, so when John Dewey talks about and says, I believe that all education proceeds by the practical participation of the individual in the social consciousness of the race. I believe that the only true education comes from the simulation of the child's powers by the demands of the social situation in which he finds himself. Through the demands, he is simulated to act as a member of the unity, to emerge from his original narrowness of action and feeling, and to conceive of himself from the standpoint of the welfare of the group to which he belongs. The child has his own instincts and tendencies, but we do not know what these mean until we can translate them into their social equivalent. We must be able to carry them back into a social past and see them as the inheritance of previous race activities. The objectives of education, when we talk about, they are the development, attainment of social skill, promotion of democratic values, awareness of civic responsibility, cultural development, understanding of natural law, training for problem solving,
and communal approach. तो जो मेन चीज़ें जिन पर ध्यान दिया गया है, केंद्रित किया है जॉन ड्यूई ने, वो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करी है, सोशल स्किल्स को डेवलप करने की बात करी है। ही हैज़ टॉक्ड अबाउट दी किस प्रकार से अपने दायित्वों को पूरा करें, किस प्रकार से जो सांस्कृतिक विकास है उसको किया जाए, कैसे नेचुरल लॉज को डेवलप किया जाए क्योंकि वो प्राकृतिक रूल्स लॉज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप करने की बात, एंड द कम्युनिटी अप्रोच दैट ही टॉक्स अबाउट. Then the aims of education regarding the importance, as you will say, is the points where he talks about creation of values, maximum growth, harmonious development of the individual, social efficiency, rich and present life. आज के युग में किस प्रकार से एक हार्मोनी या एक डेवलपमेंट बनाई जा सकते एक इंडिविजुअल के लिए और सोशल लाइफ के बीच में, अपनी लाइफ को ज्यादा आगे मोटिवेट कर सकें. जो फंक्शंस हैं शिक्षा के वो हैं एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. उन्होंने बोला है ग्रोथ का एक प्रोसेस है और एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन. शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है. सो ही हैज टॉक्ड अबाउट लीडिंग एजुकेशन टुवर्ड्स ए सोशल एफिशिएंसी. जो एक पूर्ण रूप से व्यक्ति को पूर्ण बनाने की बात करी है. ही हैज टॉक्ड अबाउट द एक्सपीरियंस दैट इज द बेसिस ऑफ हिज फिलॉसफी. अपने दर्शन की बात करते हुए उन्होंने कहा है दैट शिक्षा को रिलेट किया है एजुकेशन रिलेटिंग टू फिलॉसफी. Then we come to the theories as given by John Dewey when he says that the theories he believes on education. John Dewey focused his concept of instrumentalization and on learning by doing, on hands on learning. करने के लिए कुछ भी एफर्ट करना है, सीखना है और करके सीखना है, और केवल थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिस में भी सीखना है. तो जो इंस्ट्रूमेंटलिज्म की बात करी है इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज क्रिएटेड बाय, you can say, Dewey, in which ideas are seen to exist primarily as instruments for the solution of problems encountered in the environment. So John Dewey thought that people learned the best through experience, and he thought that knowledge could be falsified, thus it needed to be consistently challenged and experimented on. तो आज के युग में उनका कहना था कि अगर नॉलेज को फॉल्स ना हो, अगर उसको सच में साबित करना हो, तो उनके लिए इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन ही उसका एकमात्र सल्यूशन बताया. So this is what he talks about. So his theory was believed on the face on education, and the school's role was to simplify that form of communication life in which all those agencies are concentrated that will be most effective in bringing the child to share in the inherited resources of the race and to use his own powers for social ends. हर व्यक्ति को अपनी ही उस क्षमता को, उस अधिकार को, उस कर सकने की पावर को सोशल एंड्स के लिए इस्तेमाल करना होगा, ऐसा उनका मानना था. एंड जॉन ड्यूई stressed the importance of education in school not only as a place to gain content knowledge but also as a place to learn different aspects. So he talked about thinking that these changes could be brought about in the form where he stressed the importance of education in school not only as a place to gain content knowledge but also as a place to learn how to live. केवल शिक्षा नहीं ग्रहण करनी विद्यालय में, बल्कि he talked about education where he could learn to live life. जीवन जीने का तरीका सीखना ही शिक्षा का असली उद्देश्य बताया है. He believed that students should be actively involved in real life tasks and challenges. जैसा कि कई सारी स्टडीज में कहा गया कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उसका जीवन में असली तरीके से शिक्षा को योगदान बनाना, अपने जीवन में अहम तरीके से लाना. अब आती है बात कि किस प्रकार के विद्यालय का गठन जॉन ड्यूई ने किया था. तो जो उनका स्कूल था, जो उनका विद्यालय था जिसके बारे में उन्होंने बात करी है, दैट वाज द काइंड वेयर ही सेज that in January 1896
John Dewey opened the doors of the Experimental University of Chicago with the idea of setting up an experimental school by his own. जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं उसमें जिन एक्टिविटीज के माध्यम की इन्होंने बात करी है वो थे 4 से 5 साल की आयु के जो बच्चे हों उनको कुकिंग सिखाई जाए, कारपेंट्री सिखाई जाए, नीडल वर्क सिखाया जाए, क्योंकि ये एज बच्चों के कि ये इस प्रकार के मूवमेंट्स, हाथों के मूवमेंट, दिमाग का सोचना, उसको एनकरेज करना, लर्निंग को एक्सेप्ट करना सिखाता है। जो 6 वर्ष की आयु के बच्चे हों उनके लिए उन्होंने कहा दैट दे शुड बिल्ड ए फार्म ऑफ वुड, प्लांटेड wheat एंड कॉटन, दे सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, और वो मार्केट में सेल करें। और जो 7 साल के बच्चे हों दे the attitude should be that they should study prehistory in caves made by themselves। और ये आप पाएंगे कई जगह ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है क्योंकि वो इतने छोटे बच्चे हैं, but they have talked about the 8-year-olds and their attitude, they're studying navigation like Marco Polo, Colin, then Malignes and Robinson Crusoe. He was of the opinion, or you must be remembering the class where we talked about Rousseau, and he too had prescribed learning and reading of the book Robinson Crusoe। जो 9 वर्ष की हुई आयु के बच्चे हों उन्होंने कहा वो लोकल हिस्ट्री को जाने, वो ज्योग्राफी को जाने, एंड 10 years के जो बच्चे हों दे स्टडीड दी colonial history। 11 से 12 साल के बच्चों के लिए he talked about the anatomic experiments and he said that electromagnetism and political economy and photography that he has talked about। Then he says that the anatomy, when we are talking about the different aspects, ये किस प्रकार से इनकी लर्निंग हो, किस प्रकार से सीखें, कैसे इनको जाने, तो दे बिल्ड अ बिल्डिंग फॉर देयर डिबेट क्लब। ये 13 साल की आयु के बच्चों के लिए उन्होंने प्रमोट किया। The things that he taught, that the child goes to school to make changes, things to cook, to sew, to work, the wood, and to make tools through acts of simple construction. And in this context, and like the consequence of those acts, that is to articulate the studies, reading, writing, and calculus, ये इनके विचार थे, ये इन्होंने प्रमोट किया था। Then we come to the Dewey's theory and beliefs on education as he talks about. The curriculum that he says, the role of curriculum according to John Dewey was to advocate for an educational structure that makes a balance between the child and the curriculum, यानी कि जो समय के अनुसार बच्चों को सिखाएं कि किस प्रकार से नॉलेज या ज्ञान पा सकते हैं, कैसे उसके अकाउंट को डेवलप कर सकते हैं, द इंटरेस्ट, द एक्सपीरियंसेस, तो इन्हीं सब के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयत्न करना। तो करिकुलम या पाठ्यचर्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें केवल विधिवत तरीके से केवल वही कंटेंट मैटर हो जो किताबों में मौजूद हो, जो अकेडमिक हो, मगर जो बच्चों के इंटरेस्ट का हो, बच्चों के एक्सपीरियंसेस के माध्यम से हो, बच्चों की आम जिंदगी से रिलेटेड हो। इसीलिए उन्होंने कुकिंग सिखाने की बात करी है, सीविंग सिखाने की बात करी है, वुड वर्क, कारपेंट्री करने की बात करी है। He has talked about so many aspects and he has also rejected the curriculum centered view of education that is he is being talked about। So he says that this education system should bring about future changes. So he rejected curriculum centered view of education rather than student centered education। क्योंकि student centered curriculum कैसा होता है, वो curriculum वो होता है जो curriculum पर center ना करके बालक पर केंद्र होता है और बालक के हित को देखता है, बालक के इंटरेस्ट को देखता है। So active curriculum should be integrated rather than divided into subjects। So this is what he talks about in the form of education and learning। Then we come to the point कि किस प्रकार से education की बात करी है कि we discuss the various aspects of learning in the form of John Dewey's active curriculum।
So he talks about the active curriculum, which should be integrated rather than divided into subject matter segments. So he talks about flexibility, the changeability in accordance to child's interest. And further, he says reflecting social life and social activities utilities. Now, regarding the theory or beliefs of education as pertaining to the teacher's role, which John Dewey talks about, is that the teacher's role should be that of a facilitator and guide, since the teacher becomes a partner in the learning process who leads students to independently learn and discover meaning within the subject area. Teachers are responsible for achieving the goals of the school, but the specific topics to be studied to meet those goals cannot be determined in advance because they should be of the interest of children. Now, as we all know, भले ही syllabus वही हो, लेकिन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेबस खत्म कराने की जरूर होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से या स्कूल के हिसाब से उस गोल तक पहुंचने के लिए टीचर को जो रुख अपनाने की जरूरत है वो बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उस गोल तक कैसे पहुंचा जाए. मतलब बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का एक्सपीरियंस, बच्चों की लर्निंग किस प्रकार से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो. So the learner's past experience should be taken into account, and the teaching learning process as well as the environment. There's a quotation by John Dewey, which is relating to the education philosophy of John Dewey. Education is a social process. Education is growth. Education is not preparation for life. Education is life itself, as John Dewey has said. So principle of flexibility is the curriculum which is based on the principle of utility, the principle of child's activities, the principle of integration. जब इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के पाठचर्या बनाई जाएगी, करिकुलम बनाया जाएगा, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यूटिलिटी है, चाइल्ड की एक्टिविटीज हैं, इंटीग्रेशन है, they will naturally bring out the best in the child and it will be in the interest, capability and experience of the child. जो करिकुलम के संदर्भ में कहा है जॉन ड्यूई ने, दैट इज दैट देयर आर it is the actual you can say experience which is of more importance. He says the concern is such that the cases are logical and psychological. First emphasis should be on discipline and second on interest. The error is seen as a gap between a child's interest and necessity. The subject matter for appropriate subject matter is not something fixed and ready, made out for the child's interest. The problem is to decide how it can happen. भले ही हम इतना दूर तक सोच रहे हो, हमारी प्लानिंग इस प्रकार की हो कि हम बहुत चीजें चाह रहे हो, चेंजेस चाह रहे हो, मगर जॉन ड्यूई का कहना था कि ये जो 3 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि should be included in the curriculum, in these standards, first is psychological, second is social and the third is logical standard. तो जब हम psychological, social और logical तीनों standards को एक के बाद एक ध्यान में रखेंगे तभी ये impactful होंगे. So John Dewey says that at the time selecting the subject matter, the individual differences, personal interest, psychological needs, physical trends, they are all necessary to keep into mind these various aspects. At the time of making a curriculum, it is necessary that this should be kept in mind while the things are necessary as a child and the important elements of society. हमें समाज की इन सभी चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता आती है. Then the curriculum which has been outlined by John Dewey is that it presents selection of subject matter under the light of these standards, and the outcome or the outline of the curriculum are the physical nature, social sciences, art and literature and anthropology. ये विषय, ये सब्जेक्ट्स जिनके बारे में जॉन ड्यूई ने अपने करिकुलम को लेके डिस्कशन किया है. So these are the various aspects he has talked about. जब हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि कैसे उनको सक्सेसफुल किया जाए, एक सक्सेसफुल टीचिंग के लिए क्या आवश्यक है, किसी भी एकेडमिक लेवल के लिए क्या जरूरत है, तो इनके बेसिक आधार, बेसिक मूल्य, बेसिक प्रिंसिपल्स ये हैं. एजुकेट द होल चाइल्ड, कंप्लीटली बच्चे को ग्रो करने दीजिए, लर्न करने दीजिए, इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल तरीके से
फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करते हुए, कैपिटलाइज अपॉन द प्रेजेंट पीपल, लेट मोटिवेशन बी इंट्रिंसिक, make learning experiences vivid and direct, stress प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है उस पर इम्पोर्टेंस, उस पर एम्फेसिस दी जानी चाहिए. बेसिस ऑफ फंक्शन लर्निंग शुड बी देयर एंड प्रोवाइड फॉर द अचीवमेंट ऑफ लास्टिंग पीपल सेटिस्फैक्शन. और जो करिकुलम मिरर है, जो सोसाइटी का, कम्युनिटी का, उसको ध्यान में रख के करिकुलम बनाया जाना चाहिए कि समाज का हित हो, बच्चे का इंडिविजुअल हित हो और लर्निंग ज्यादा बेहतर हो. Then the method of teaching that John Dewey has talked about is that the teacher facilitates student activity as ministry of instruction. He said that the teaching method is like, you can say, is a method which is dealing with various aspects of student-centered problem solving, learning by doing, project method, demonstration एंड ग्रुप वर्क. जब तक ये इंटरैक्टिव नहीं होगा, जब तक उसमें मेथड ऐसा नहीं होगा कि बच्चे का हित देखा जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप किया जाए, जो प्रोजेक्ट मेथड है यानी कि आपस में सारे विषयों को लिंक करते हुए, टॉपिक्स को लिंक करते हुए, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, ग्रुप में मिलकर बच्चों का एक साथ कम्युनिटी वर्क की तरह से माध्यम से सीखना, तब तक वो लर्निंग बेहतर नहीं हो पाएगी. सो प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिन मेथड्स की बात करी गई है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात करी गई है, सो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स हाउ लर्निंग टीचिंग कैन बी इनकलकेटेड. जहां तक हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट द एंड. केवल अंततः हमें डिसिप्लिन लानी है ऐसी बात नहीं है. डिसिप्लिन तो मेंटेन करनी है, फ्री डिसिप्लिन होनी चाहिए. टीचर्स मस्ट नॉट बी डिसिप्लिनिंग द स्टूडेंट्स, इट मस्ट बी स्टूडेंट्स हु मस्ट देमसेल्व्स बी डिसिप्लिनिंग देमसेल्व्स. ये इम्पोर्टेंट है. और विद्यालय को, स्कूल को एक एक्सटेंशन ऑफ होम माना है, एक मिनिएचर सोसाइटी मानी है. एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय जॉन ड्यूई व्हेन ही सेड कि स्कूल जो है एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी है. स्कूल इज अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जहां पे बच्चा शिक्षा ग्रहण करने आता है, सो दैट लर्निंग बिकम्स नेचुरली मच मोर इफेक्टिव इन दिस प्रोसेस. देन जब जहाँ टीचर के रोल की बात करी गई है, तो टीचर कैसी हो, क्या उसका एटीट्यूड हो. टीचर शुड बी एज प्रैक्टिकल एज जॉन ड्यूईज मेथड ऑफ टीचिंग इज. ही सेज कि हमें ऑब्जर्व करना है, प्लान करना है, एनकरेज करना है, बच्चों की एक्टिविटीज में मोटिवेट करना है, एंड एनवायरनमेंट कैसा हो, किस प्रकार के अनुभव बच्चे ले सकते हैं, पा सकते हैं. और टीचर को एक फ्रेंड और एक हेल्पर और एक गाइड की तरह से होना चाहिए. टीचर को बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं करनी चाहिए. एंड द टीचर शुड ऑल्सो एनकरेज अ डेमोक्रेटिक and cooperative aspect as well as intellectual and aesthetic development. तो यदि जब हम इस तरह के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारी लर्निंग बच्चों की ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी. तो वो रिसोर्सफुल या सिंपैथेटिक या एटीट्यूड करने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा. Then he talks that the John Dewey says we must recognize the teacher as not only the main communicators of knowledge and skill, but also as enforcers of rules of conduct. हम कोई भी रूल को, कंडक्ट को अगर इन्फोर्स करना चाहते हैं तो बच्चों को हमें पहले टीचर को एक आइडियल रोल की तरह से प्ले करना होगा जहाँ पे लर्निंग ज़्यादा फ्रूटफुल बने. इफेक्टिवनेस या उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए, ज़्यादा रिटेंशन के लिए, बट रादर दैट द टीचर शुड फैसिलिटेट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट अलाउज स्टूडेंट्स to play a role in creating their atmosphere around them. According to John Dewey, teachers are the organs through which pupils are brought into effective connection with the material. जब स्टूडेंट्स का की लर्निंग होना एक सबसे अहम बात है, मगर वो अहम बात करने वाला टीचर है, और टीचर बच्चों के हित को ध्यान में रखकर उनकी नीड, उनकी एबिलिटी, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है, तो कैपेबिलिटीज को देखकर किस प्रकार से लर्निंग करना है ये देखते हैं. So accordingly, the teachers should see that the organs through which the pupil are being made into learning effectiveness.
तो जो टीचर की एक्टिविटी एक्सपीरियंस बेस्ड हो, Dewey should also see that it is a social process, and in this process the teacher uses the position of external boss और डिक्टेटोरियल. अगर डिक्टेट करने लगे टर्म्स कि मैं टीचर हूँ, मेरी बात को ही सुनना है, मेरी बात को मानना है, तो वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है. And we have to see that this is not the case. It should become more of a rapport, a good rapport between the teacher and the student, an ideal form which the pragmatic approach motivates, which it approves of, and John Dewey tries to bring that forth into reason. As a leader, the teacher should be good administrator and planner, because instituting us as much more difficult work than it will be. Ultimately, the result is better education. So John Dewey's role of a teacher is not the authoritarian, but the facilitator. उसको facilitate करना है, encourage करना है, and suggestions देने हैं. बच्चों को क्यूरियोसिटी को सामने लाते हुए बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए मोटिवेट करना है, so that they help in planning and implementing of courses of study, and also bringing forth the command of several disciplines and letting them having that method of inquiry and problem solving integrated curriculum. जहां तक हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि what are the various contributions as given by John Dewey, so given a progressive outlook to education, it's a very, you can say, motivational aspect, the learning aspect, कि क्या learning की बात करी है, उन्होंने किन चीज़ों को motivate किया है. So he has said living and doing itself in education, preparing for life through life experiences, social efficiency, child-centered education, core curriculum, integrated curriculum and activity curriculum, democracy in education and experimental school. जॉन ड्यूई ने एक प्रोग्रेसिव आउटलुक रखा शिक्षा के प्रति, और उन्होंने शिक्षा को जीवन माना, जीवन को शिक्षा माना, जीने के तरीके को, एजुकेशन को उन्होंने सामने लाते हुए ही टॉक्ड अबाउट प्रिपेयर्डनेस फॉर लाइफ थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस, सोशल एफिशिएंसी की बात करी, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करी, और ऐसे करिकुलम की बात करी जो इंटीग्रेटेड हो, जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाए और जो एक्टिविटी बेस्ड हो. Then he talks about democracy in education and experimental school जो उन्होंने स्थापित किया, उनका फेमस एक्सपेरिमेंटल स्कूल जिसकी हम आज भी बात करते हैं, मिसाल देते हैं, और बहुत तरीके की लर्निंग की बात की जाती है. So when we talk about John Dewey's system of education, he says that the various disciplines, he said self-discipline is important and democracy is required. और डेमोक्रेसी, जब जहाँ भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ ग्रोथ होगी, वहाँ आगे बढ़ने की चाह होगी, वहाँ पे एक सबके अंदर की इच्छा होगी कि हम आगे बढ़ें. So the books written, we will come to the books written by but there are certain aspects which have been criticized by John Dewey. वो उन्होंने स्पिरिचुअल वैल्यूज को निगलेक्ट किया है, केवल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करी है, कोई क्लियर शिक्षा के उद्देश्यों पर इम्पोर्टेंस नहीं दी है. And he has given too much emphasis on utility, on practical approach, on practice and practicalism, and he said too much reliance on experimental method. बहुत ज़्यादा रिलायंस उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड की रखी, प्रोजेक्ट मेथड की रखी, एंड ही टॉक्स अबाउट कॉस्टली एंड नॉट, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड बहुत सरल नहीं होता, बिना ज़्यादा पैसा खर्च करे नहीं आता. सो यू रिक्वायर वेरी ट्रेन्ड टीचर्स, cost effectiveness, you require it to be, there are heavy responsibilities on teachers, and that is all which is required to be seen. अगर प्रोजेक्ट मेथड की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सारे विषयों को लिंक करना पड़ता है, कई बार विषय लिंक नहीं हो पाते हैं, कई बार जो टॉपिक्स हैं वो रिलेट नहीं हो पाते, टीचर्स उतनी ट्रेन नहीं होती हैं या उतना इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, बच्चे जो हैं वो अनुशासन बिल्कुल नहीं रख पाते, तो उस केस में टाइम बहुत वेस्ट होता है.
कोई एग्जाम कंडक्ट करने की बात अगर हम करें तो वो एग्जाम नहीं कंडक्ट हो सकता, असेसमेंट नहीं हो पाता, इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है. सो दीज आर द वेरियस criticisms that have been given regarding the various methods and his approach to education which John Dewey has talked about. So these are the various aspects which he says that they must be looked into. So जहाँ तक इनकी writings की बात आती है, John Dewey says the school and society is another one topic he has discussed and talked about. School and the child, स्कूल ऑफ टुमारो, मतलब इन्होंने, जॉन ड्यूई ने जो सबसे ज्यादा महत्ता इंपॉर्टेंस दी थी वो थी विद्यालय पर, बच्चे पर. तो विद्यालय कैसा हो, बच्चे की ट्रेनिंग कैसी हो, किस प्रकार से बच्चे को ट्रेन किया जाए कि उसकी लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ज्यादा दूरदर्शिता वाली हो, ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की हो, उसको कैसे अनुभव मिले, किस प्रकार से वो ज्ञान हासिल करे, कैसी लर्निंग हो. सो ही टॉक्ड अबाउट एजुकेशन टुडे, इनकी एक और राइटिंग है, हाउ वी थिंक, हमारी सोच कैसी हो, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन की भी इन्होंने बात करी है. इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी है, सेल्फ वर्क की बात करी है, ओपन डिस्कशंस की बात करी है, स्कूल एंड टीचर एंड हाउ मच फ्रीडम शुड बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड. तो जो इनकी अप्रोच थी वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी. इट वाज अ प्रोग्रेसिव अप्रोच leading to different aspects and learning, and we need to understand that democracy शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. So he has talked about theory of values, he has talked about different learning values, knowledge, learning, ability, और इन सभी के साथ में इन्होंने लर्निंग की बात करी है. तो जो उनकी एजुकेशन है उसका जो मूल आधार है वो उनकी education as an unfolding process which goes on from one to another, as a pedagogical device from within, जो मनुष्य के अंदर है, बच्चे को उसके अंदर से बाहर लाना. Education as a training of faculties, development of initiativeness, inventiveness and adaptability, एजुकेशन एज फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों पर इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, एक्सेप्टेंस बताई है. एंड ही हैज टॉक्ड अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कि एक के बाद एक धीरे धीरे अनफोल्ड होता है और परत पर परत निकलता जाता है. इनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सारी हमारे सेंसेस को ट्रेन कर दे, हमें अडेप्टेबिलिटी सिखाए, हमारे अंदर इनोवेटिवनेस लाए, हमारी लर्निंग एबिलिटी को ज़्यादा सूत्रधार बनाए. So he has talked about reorganization of experiences, of increasing perception, of fundamental methods for social reforms. तो जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, we come to the aspects कि इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के बेसिस पे he has talked about his educational theories, his educational learnings, जो कि बेस थी. एक माई पेडागोगिक क्रीड की बात है, लिखी है इन्होंने 1897 में. स्कूल एंड सोसाइटी जो बहुत फेमस हुआ 1900 में, और चाइल्ड एंड द करिकुलम 1902 में, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इन 1916, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन इन 1938. ये कुछ राइटिंग्स, कुछ इनके लेख हैं जो जिन्होंने बहुत हलचल मचाई और जिनकी उपयोगिता आप भले ही आज से 100-120 साल पुराने क्यों ना हो, लेकिन आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, उतने ही एस्पेक्ट्स लाते हैं. नाउ where the education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. This quote was given by John Dewey, and John Dewey की इस लेख के साथ में I will again begin with you different aspects. I will discuss कि क्या उन्होंने क्यों इस चीज़ को importance दी है. The very aspect that he says that why it is important, how it is important, how it should be brought about, it says that we shall be discussing, and we have thought about various aspects of जॉन ड्यूई. उनकी आज की उपयोगिता सबसे अधिक इस माने में है कि उन्होंने बात करी है प्रैग्मेटिक अप्रोच की, उन्होंने बात करी है उपयोगिता की, अनुभव की, प्रयोग की, प्रयोगशाला की, और स्कूल को एक प्रयोगशाला बताते हुए बच्चे को एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की पूरी
फ्रीडम देने की बात करी है। और विद्यालय एक प्रकार से बच्चे को नित्य नए प्रयोग करने के लिए फ्री छोड़ता है और जीवन के हर पहलू को रियल लाइफ से जोड़ने के लिए उसमें डॉक्टर जॉन ड्यूई हैज टॉक्ड अबाउट। सो विद दैट आई end my topic on John Dewey. Hope you have enjoyed and learned in this process of class. Thank you, students. Thank you all. Thank you so much.